Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are discussing about the models of curriculum development. Types of curriculum models. There are three types of curriculum models. These are rational objective models, Ralph Taylor and Hilda Taba, and second is the cyclical models, Wheeler and Howard Nicholas, and the third type of curriculum model is dynamic interaction models, Deckerbacher and Malcolm Skillback. In previous lecture, we have studied about the model of Ralph Taylor. Now, we discuss what is a rational model. Rational models are also called objective, classical, or mean-ended models. They are emphasize the fixed sequence of curriculum elements, beginning with objectives and following a sequential patterns from objectives to content, method, and finally evaluation. What is a model? Generally speaking, models are miniature representation that summarizes data and or phenomena and thus act as an aid to comprehension. Zas in 1976. In curriculum, we frequently use graphical models as they enable curriculum developers to visualize curriculum elements, their relationship and processes of development and implementation. These are the definition of the models. Now, what are the rational models? In this pattern, objectives serve as a basis for devising subsequent elements with evaluation indicating the degree of achievement of those objectives. There are the two principal proponents of the rational model are Ralph Taylor and Hilda Taba. In previous lecture, we have discussed about the Ralph Taylor model. Now I am switching to the Taba model. What is the Taba model? Hilda Taba model. Taba took what is known as a grassroots approach to curriculum development. She believed that the curriculum should be designed by the teachers rather than the handed down by the higher authorities. हेल्डा डाबा ये कहती थी कि टीचर्स को जो है करिकुलम डेवलपमेंट में शामिल करना चाहिए क्योंकि वो ही डायरेक्टली करिकुलम को डील कर रहे होते हैं और उसके इन्स एंड आउट्स ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं और करिकुलम डेवलप करने में उनका रोल अहम होना चाहिए. Taba explained that all curricula are composed fundamental elements. A curriculum usually contains some selection and organization of content. It either implies or manifests certain patterns of learning and teaching. Finally, it included a program of evaluation of outcomes. The order of the objectives Taba perceives is उसने 7 स्टेप्स दिए हैं. टॉबा के मॉडल के जो प्रोमिनेंट फीचर जो है देयर आर द 7 स्टेप्स. स्टेप 1 इज़ डायग्नोसिस ऑफ नीड्स. पहला कि नीड्स जो हैं उनकी डायग्नोसिस है. सेकंड वन इज़ द फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट. फोर्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. एंड इन फिफ्थ स्टेप सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. एंड इन स्टेप नंबर 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. एंड द लास्ट स्टेप determination of what to evaluate and ways and means of doing it. Taba's model is systematic, logical and comprised of the sequential steps. Taba के मॉडल में ये जो 7 स्टेप हैं ये एक सीक्वेंस के साथ ये हेल्पफुल हो सकते हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए. नाउ सेकंड फेज की तरफ आते हैं, साइक्लिकल मॉडल्स की तरफ. साइक्लिकल मॉडल्स क्या होते हैं? साइक्लिकल मॉडल्स सी द करिकुलम प्रोसेसेस एज कंटिन्यूइंग एक्टिविटी constantly in the state of change as new information or practices become available. The cyclical model is responsive to needs and indeed it is argued that these needs are ongoing, necessitating constant updating the curriculum process. Cyclical models views elements of curriculum as it interrelated and interdependent so that the distinction between the elements as in rational model are less clear. A new element was introduced into the curriculum process of cyclical models called situation analysis.
उसमें जो नई चीज़ जो है वो सिचुएशन एनालिसिस है. इट रिक्वायर्स an analyst of those factors into which a curriculum is to be introduced. Two principal proponents of the cyclical models are Wheeler and Howard Nicholas. अब हम पढ़ते हैं कि Wheeler's model क्या है. Wheeler suggested 5 interrelated phases in the curriculum process, which, when developed logically and temporally, would produce an effective curriculum. These 5 phases incorporate the essential elements outlined by the Taylor and Taba, although they are represented in somewhat different manner. उसके phases कौन से हैं? 5 phases हैं. Number 1, selection of aims, goals and objectives. In second phase, selection of learning experiences to help achieve these aims, goals and objectives. Third, selection of content through which certain types of experiences may be offered. And the fourth one, organization and integration of the learning experiences and content with respect to the teaching learning process. And the fifth and the last step in the Wheeler's curriculum development model, evaluation phase. Evaluation of each phase and attainment of goals. That is the picture of Wheeler model. First one is aims, goals and objectives, as we have discussed in the previous slides. And the next is Audrey and Howard Nicholas model. The Nicholas model emphasizes the logical approach to curriculum development, particularly where the need a new curricula emerged from situation. They argued that change should be planned and introduced on an rational and valid basis according to a logical process. And this has not been the case in the vast majority of the changes that have already taken place. They refined the work of the Taylor, Taba and Wheeler. निकोलस ने तीनों जो हैं वो टेलर, राल्फ और व्हीलर के काम को और ज़्यादा जो है डिफाइन किया, emphasizing the cyclical nature of the curriculum process and the need for a preliminary step, a situation analysis. The authors contended that before the more obvious element in the curriculum process are undertaken, the context or situation in which curriculum decisions are made requires detailed and serious consideration. Situation analysis then is a preliminary stage which makes curriculum developers cognizant and the factors impinging upon the curriculum they are devising. अब इसके जो हैं इसके जो 5 स्टेप्स हैं, नंबर 1 वो कहते हैं सिचुएशन एनालिसिस, नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. चौथे स्टेप पे सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड एंड इन द फिफ्थ स्टेप इज इवेल्युएशन. ये निकोलस मॉडल को जो है वो ग्राफ की सूरत, उसकी सूरत में, पिक्चर की सूरत में पेश किया गया है कि पहला सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिचुएशन एनालिसिस, इवेल्युएशन और ये सो ऑन. नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक मॉडल्स की तरफ, जो तीसरी किस्म के मॉडल हैं. इन डायनेमिक मॉडल्स of curriculum offers an alternative views of the processes of curriculum development. Proponents of these models argue that the rational and cyclical models do not reflect the reality of curriculum development in educational organization. The curriculum processes does not follow a linear sequential patterns. Rather, curriculum development can commence with any curriculum element and proceed in any order. Indeed, curriculum developers may move through the various elements of curriculum several times before they are satisfied with the final curriculum product. As well, the need of the learners are seen as more important in determining a curriculum planning than some determined set of information to be acquired. Two significant contributors of these models are Decker-Walker and the Malcolm Skellback. Now we discuss what is the Decker-Walker model
of curriculum development explains, Walker contended that curriculum developers do not follow the perspective approach of the rational sequence of curriculum elements when they devise curricula. Rather, they proceed through three phases in the natural preparation of curriculum. It is the natural in a sense that it represents the phenomena and relations observed in actual curriculum projects. थ्री फेजेस कौन सी हैं वो कहता है प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट्स deliberations and curriculum design. What are the platform statements? Statements are recognized by curriculum developers. The platforms includes an idea of what is and a vision of what ought to be, and these guides the curriculum developers in determining what he should do to realize his vision. And what are the deliberations? In deliberation phase, in this phase, Walker contends that during this phase, individuals defend their own platform statements and push spur of the movement's ideas. Together, these events provide a situation where developers seek to clarify their ideas and reach a consensus. And in the third is the design. In this phase, developers makes decisions about the various processes, components, the curriculum elements. Decisions have been reached after extended discussions and compromise by individuals. The decisions are then recorded, and these become the basis for curriculum document or specific curriculum materials. Now, Skillback model. Skillback suggests an approach for devising curriculum at the school level by which teacher could realistically develop appropriate curriculum. The model claims that SBCD, school-based curriculum development, to work effectively 5 steps are required in a curriculum process. Skillback ने 5 steps बयान किए हैं वो कौन कौन से हैं नंबर 1 सिचुएशन एनालिसिस सेकंड goal information number 3 program building and number 4 interpretation and implementation, and the fifth step is monitoring feedback assessment and reconstruction. That is the example of the Skillback model. First is the situation analysis, and other is the goal formulation, and third one is the program building, and next one is the interpretation and implementation, and the next is the monitoring, feedback, assessment and reconstruction. Students, ये आपके जो हैं जो मॉडल्स हैं ऑफ करिकुलम में, इसमें हमने जो आज डिस्कस किया वो 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल्स थे. पहले वाला जो है वो रैशनल या ऑब्जेक्टिव मॉडल्स जो कि रॉल्फ टेलर और हिल्डर टॉपर ने बयान किए, और जो दूसरा जो है आपकी टाइप है वो साइक्लिकल मॉडल्स हैं जो व्हीलर्स एंड होवर्ड निकोलस ने अपने अपने मॉडल्स बयान किए, और जो थर्ड टाइप है जिसे हम डायनामिक या इंटरेक्शन मॉडल्स हैं जो डेकर, वॉकर और मेलकम स्किलबैक ने. अब आपने इनको देख लिया है कि टेलर ने भी जिसे कह सकते हैं कि उसने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, हेल्डर टाबा के भी जो 7 स्टेप्स हैं. अब वो जो हेल्डर टाबा के जो 7 स्टेप्स हैं मैं रिपीट कर देता हूँ. डायग्नोसिस ऑफ नीड्स हैं, फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू इवेल्युएट एंड वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट है. और जो है आपके व्हीलर्स मॉडल में उसने भी 5 जो है वो आपके फेसेस बयान किए हैं. पहला सिलेक्शन ऑफ एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरे में सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, थर्ड में सिलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू विच सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में भी ऑफर्ड है, और चौथे में ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और 5वें स्टेप में इवेल्यूएशन फेज आ जाती है. और जबकि आपके जो है ऑड्रे एंड निकोलस मॉडल्स में भी 5 स्टेप्स हैं. सिचुएशन एनालिसिस उसने यहाँ कहा है, दूसरा उसने कहा सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, थर्ड वन जो है सिलेक्शन ऑफ
एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है, और चौथे में जो है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेथड है, इसमें मेथड की बात आ गई, और पाँचवा स्टेप भी इसमें इवेलुएशन है। और जब हम डायनेमिक मॉडल्स की बात करते हैं तो डेकर वॉकर के मॉडल में उसने 3 फेजेस का जिक्र किया है, जिसे प्लेटफॉर्म स्टेटमेंट्स कहा है, डेलिब्रेशन एंड करिकुलम डिज़ाइंस कहा है। और जब हम बात करते हैं स्किल बैक मॉडल्स में, उसने भी 5 जिसे कह सकते हैं कि स्टेप्स का जिक्र किया है। पहला स्टेप उसका सिचुएशन एनालिसिस है, दूसरा बेटा गोल इन्फॉर्मेशन है, थर्ड जो है प्रोग्राम बिल्डिंग है, फोर्थ वन इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, एंड द फिफ्थ इज़ मॉनिटरिंग फीडबैक असेसमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन फेज़ है। Thank you very much. Any question? Welcome. Allah Hafiz.